Sir, before we talk on how the fitness industry is, can you all let us know how did you start? What made you get into the fitness industry? Fitness and nutrition was never a business for me actually. It was always a passion. नहीं फॉर्मेट है कि आजकल सोशल मीडिया इतना चलता है कि अगर आपका क्वालिटी प्रोडक्ट इज रियली गुड लोग डालते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है इवन इफ दे आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर और एनीबॉडी बट डालते एंड बट उससे भी ज्यादा लोग डालते हैं अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है उससे भी ज्यादा लोग नेगेटिव फीडबैक देते हैं वो सबसे बड़ी स्कैरी चीज है थिंक अबाउट इट यू कैन गेट ब्रोकन इन जस्ट वन सिंगल वायरल रील कई लोग का एक रिस्पॉन्स आ कि अरे यार अगर सप्लीमेंट लेना है ना ट्राई इंटरनेशनल ब्रांड्स No, I'm just being very blunt. I am very I'm not taking name of any brand. नहीं you don't take even I won't take because लोगों को लगेगा कि मैं अपने ब्रांड की तारीफ करना चाहूंगा कड़वा सच ये है कि by the way मैं सारे ये सो कॉल्ड इंटरनेशनल ब्रांड के लवर्स को बोलना चाहूंगा कि प्लीज उनके डब्बे को पलट के पढ़ो. Hi everybody, welcome to yet another podcast of Andropique Mic Testing with me, Kevin Phillips. Now my guest here today, he is a brand builder. He knows the importance of contacts and he is very focused on building a strong nation. So all my viewers, let me welcome to you at the podcast. My guest who's very known in the fitness industry, this one sir. Warm welcome sir to the podcast of Andropique Mic Testing. Sir. Thank you, Gavin. Sir, before we talk on how the fitness industry is, can you all let us know how did you start? What made you get into the fitness industry? Fitness and nutrition was never a business for me actually. It was always a passion. Passion converted into business. Actually, you will not believe till the first 2-3 years of my involvement in the business of fitness, I was taking it as a... So involvement in fitness, and how did you start off with? I started with the local gym. As a trainer? Not as a trainer, I owned the local gym. So you owned the gym. I've always been an entrepreneur. Always the attitude really nice. was always to do business rather than to work somewhere. Very good. Nothing against about working somewhere because I even worked somewhere. Okay. And some of the most prominent places. And the idea to work over there was purely from the perspective of learning the ropes and the way the things are done. Having said that, the first thing which I did was my local gym in my area, and I took over that local gym to run. Even though I was a lanky boy, I was just working out for the first few months. And when I realized that this gym is actually up for a sale, I grabbed that opportunity. Somehow I convinced the owner, give it to me free. I'll give you a fixed amount. And I did that and I achieved that. I believe my convincing power has always been magical. So, having said that, that started my journey in the fitness industry. But nutrition was my first love, even then. So I did certain courses in nutrition, of sports nutrition. And I used to dabble with a lot of supplements. I used to import them personally by using PayPal and whatnot. That's it. I used to get supplements out here in India. Supplements were not easily available in India at that point of time. So I used to procure them somehow from either Dubai or from US by using PayPal, money transfer. I've done it all. Then finally, my very close friend also, he brought Optimum Nutrition in India. That was a very exciting part of the nutrition industry in India, to be honest. Having said that, I was lucky enough to work with Kaisak sir in his management team. I operated, worked at multiple of his gyms. And that gave me a fair exposure on how to run commercial gyms. I started my first commercial gym in the year 2009. Till that time, I was just dabbling into local gyms, doing some nutrition work here and there. Having started my own commercial gym in 2009, that kind of opened up my mind to a whole new world. And then I scaled up very fast, very aggressively. At one point of time, we were having more than 27 branches all over India. The head office being in Mumbai. Then my passion for nutrition was always there. So I partnered with a company called Copran Pharmaceutical. That's it. And relaunched their nutraceutical arm, which is called as Big Flex. And I created a new vertical in their company called Farm Grade for Micronutrients. I launched certain new products in the company
re-innovated the whole packaging, the formulation, everything. Quite successful at that. After my stint with Big Flex, I started my own nutraceutical company by the name True Farm Labs. Now, True Farm Labs owns 4 brands under it. One for macronutrients, being Strong Nation, for micronutrients, Soups Compound, which is pure products for your organ care, your heart care, your overall, wellness. Then I have something called a snack right in it, which is for healthy snacks. Then I have something called as Herbs of India, which is Ayurveda line. Now, quite recently, I have started a new vertical for peanut butter and healthy snacks by the name Savory. Savory. Yeah, I have partnered with a very big FMCG snack vertical company called Bajaj Foods. Oh, wow. So now I'm going to innovate and bring about a lot of new products, new packaging, new innovation in healthy snacking in that particular form. Then we are even doing very exclusively a stevia brand called Sugar Fighter. But why this particular stevia? Oh. It is a patented technology of this stevia. You will never feel that you are having stevia. You will not feel the aftertaste. You will not have that sour feeling of having stevia. So that's about it. These are the things which I are doing right now. On my brand vertical, brand building vertical called Brandpreneur, I'm doing a lot of brands for UAE, for US, and some of the brands in India also. So, yeah. Wow, it's really amazing, sir. I mean, Life is great. You're contributing a lot for the fitness industry. Honestly, I'm just trying my best to develop the best brands possible with the best exposure which I am getting from all around the world. I've been lucky to be associated with some of the big names of US as well as in UAE. So yeah, I'm just using those resources and trying to use those experience to build better brands here in India. Right, sir. So in today's world, where a lot of people, take their workout seriously and look into supplements as a very important part of their meal. How do you think having a supplement brand in today's world is it really helpful? Because a lot of people, you see new brands coming out very often. So the thing is that people are very educated now. पहले एक time था कि that people didn't knew a lot about supplements. They didn't knew about the science of supplements, and it was a taboo thing at that point of time. Up to people are very educated. People understand whey protein is a very basic thing to be taken. It is a product which is to be taken to actually supplement your deficient in protein intake, which is there deficient in maximum people. Vitamin D3, protein, B complex. These are deficient in most of the people nowadays. Having said that, people are now educated enough. They understand the importance of supplementing. They understand that not everything is bad. And obviously, people know what they are paying for. There are brands which are good. There are brands which are very ethical. There are some of the brands which are very ethical, doing some great job. So yeah, it is flourishing and it will always flourish, and the good and the bad and the ugly is always going to be there in the industry. Right. Nobody can stop that. So the takers are there. People should be educated enough that if at all they are paying good money, they are going to get good product. If at all they are paying less money, obviously something has been compromised. They Correct. should be knowledgeable enough, logical enough to understand that कि यार कुछ तो गड़बड़ है ना, तभी तो सस्ता मिल रहा है. Correct. So yeah, and with the advent of quick commerce and internet, now it is so easy that 10 minutes maybe you will get your product. So yeah, times are changing. Right. I keep telling all my people in the offline circle, the store owners, that the better the service they will give, the better the product they will sell. जितना ऑनेस्ट प्रोडक्ट बेचेंगे, जितना दिल से अगर कस्टमर को एक्सप्लेन करेंगे, उतना ही वो कस्टमर उनके पास रहेगा. विच मीन्स मतलब कितना भी ऑनलाइन कितना ऐड हो जाए, कितना भी प्रोडक्ट का प्रमोशन हो जाए, आज भी इंसान को इंसान के ऊपर भरोसा है. लोग ये बात भूल जाते हैं. जो कस्टमर आज भी शॉप में आते हैं, उसको एक शॉप ओनर के ऊपर एक काइंड ऑफ फेथ रहता है. नाउ इमेजिन दैट शॉप ओनर नॉट रियलाइजिंग दिस फैक्ट एंड सेलिंग हिम एनी क्रैप थिंग, एनी क्वालिटी, एंड देन थिंकिंग दैट ही मेड Profit. But the truth of the matter is that कि उसने अपना लॉस किया है for the long run. The customer won't come back to him if he knows the fact well. अरे he will not just come back, he will even stop other people to come to his store. Correct. वो भूल जा रहे हैं ये बात को.
उनको ये समझना पड़ेगा कि यार क्वालिटी प्रोडक्ट अगर वो बेचेंगे तो उनका ही बिजनेस स्टेबल और फोकस्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगा। नहीं तो ऑनलाइन को तुम कैसे बीट कर सकते हो? ना तुम उतना स्टॉक रख सकते हो, ना तुम उतनी अच्छी सर्विस दे सकते हो, ना तुम उतनी सारी वैरायटी रख सकते हो, ना वैसी डिस्काउंटिंग आप एक्चुअली नहीं दे सकते हो। तो तुम्हारे पास में एक्चुअली स्ट्रेंथ क्या है? सिर्फ ये एक चीज, विच इज इंसान को आज भी इंसान के ऊपर फेथ है। Communication, the right way you communicate to your customers. एंड द फेथ पार्ट, गैविन, आज भी एक इंसान स्टोर में जब घुसता है ना, वो ये देख के घुसता है कि यार वो भाई साहब मेरे को अच्छा नॉलेज देंगे या कुछ सही सजेस्ट करेंगे। यार वो एक अनकहा फेथ है इंसान का इंसान के ऊपर। नहीं तो वो टेक्नोलॉजी से ले लेगा ना यार। वो टेक्नोलॉजी से क्यों नहीं ले रहा है? इसीलिए नहीं ले रहा है कि चल ना मैं किसी से मिलके बात करके समझता हूँ। प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या, कैसे, व्हाट इज और मेरे भाई शॉप वाले अगर वो बात को रिस्पेक्ट ही नहीं देते हैं, और काफी मेरे शॉप वाले मुझे ये भी बोलते हैं, अरे यार भैया लोग सुनते नहीं है यार, उनको सस्ता चाहिए, उनको डिस्काउंट चाहिए, उनका बजट नहीं है। तो मैं उनको पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की कि यार ठीक बात है उसका बजट नहीं है, बट उसको रॉन्ग चीज मत दे भाई। उसको सस्ते के चक्कर में उसको रॉन्ग चीज खरीदने मत दे। भले हो सकता है आई नो तेरे को भी लॉस होगा कस्टमर लॉस से, लेकिन एटलीस्ट लॉन्ग रन में तेरी इज्जत बनेगी और तेरे को मालूम पड़ेगा कि वो कस्टमर वापस तेरे पास ही आएगा एक नहीं दिन। क्योंकि यार नहीं तो ऑफलाइन का बिजनेस मर जाएगा, फॉर वेरी सिंपल रीजन दैट कि ऑनलाइन बहुत अलग स्पीड पे जा रहा है। क्विक कॉमर्स तो अब सुपर स्पीड पे जा रहा है। अब तो भाई तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ और बहन और वाइफ भी ऑनलाइन ऑर्डर करती है बेसिक ग्रोसरी। कभी तुमने इमेजिन किया था ये होने वाला? कभी नहीं। अब कभी नहीं। 10 मिनट में घर पे आ जाता है भाई। घर से नीचे उतर के जाने से पहले तुम्हारे पास में प्रोडक्ट आ जाता है 10 मिनट में। 10 मिनट के अंदर ही आता है, उससे भी अंदर आता है। सो तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारा रिटेल स्टोर चलेगा? सो अच्छे प्रोडक्ट हमेशा टिकेंगे, लॉन्ग रन तक का टिकेंगे। गंदे प्रोडक्ट की एक ही लाइफ लाइन रहती है, वो उतना ही दिन चलेगा। सो कोशिश तो यही रहेगी मेरी खुद की भी, हमेशा मेरी हमेशा से ही ऐसी कोशिश रही कि आई मेक सम ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। I try my best to provide them the latest in science in formulation. I try my best to provide them the most exquisite packaging which they have ever seen. So yeah, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन मजा आता है बाद में। कस्टमर जब यूज करता है उसके बारे में अच्छा बोलता है, जब रिजल्ट्स आते हैं तो हाँ उसको बोलेंगे, फिर अच्छा लगता है। और यार मेरा स्पेशली ये हमेशा से गैविन मानना रहा है ना, यार तुम वो बेचो जो तुम खुद खा सकते हो। तो मैं तो वही खाता हूँ और वही बेचता हूँ। मैं वही अपने घर में भी खिलाता हूँ, अपने दोस्तों को भी खिलाता हूँ। तो मेरा हमेशा से ऐसे ही सोचना रहा है यार, सेल व्हाट यू कैन योरसेल्फ टेक, अदरवाइज डोंट सेल इट एट ऑल। या एंड डोंट मेक थिंग्स फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि बस हाँ बिक रहा है तो बनाओ। वो मजा ही नहीं आता है उसमें, उसमें जॉय नहीं है। वो जॉय क्या है? वो मेरे को ऐसा लगता है मैं अपने आप से फिर चीटिंग कर रहा हूँ। भले ही प्रोग्रेस स्लो हो, इट्स ओके, बट यार वो स्लो से ज्यादा वो ग्रोथ हमेशा अप स्केल पे ही रहेगी, नीचे नहीं जाएगी। पीपल विल ऑलवेज नो कि भाई क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा इसके पास। नहीं, फॉर्मेटिंग के आजकल सोशल मीडिया इतना चलता है कि अगर आपका क्वालिटी प्रोडक्ट इज रियली गुड, लोग डालते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है, इवन इफ दे आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर और एनीबॉडी, बट डालते हैं। एंड बट उससे भी ज्यादा लोग डालते हैं अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उससे भी ज्यादा लोग नेगेटिव फीडबैक देते हैं। वो सबसे बड़ी स्कैरी चीज है। थिंक अबाउट इट, यू कैन गेट ब्रोकन इन जस्ट वन सिंगल वायरल रील अबाउट योर प्रोडक्ट। करेक्ट। बट सम ऑफ द ब्रांड्स आई हैव सीन, उनको उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। They continue doing it. बट ठीक है, मेरा तो ये सोचना है कि यार अपने को सोने का है आराम से, अपने को बिना स्ट्रेस के सोने का है। प्लस अपने को आई डोंट वांट समवन पॉइंटिंग देयर फिंगर्स एट मी कि यू मेड शिट प्रोडक्ट और यू गेव मी शिट प्रोडक्ट। आई डोंट वांट दैट। और मेरे को जॉय नहीं है उसमें, मैं कर रहा क्यों? मजा आना चाहिए मेरे को, पैसा बन जाएगा। फॉर्मेट कुछ भी करो तो पैसे बन जाएंगे, लेकिन अच्छा काम करने में जो अच्छे काम के अंदर पैसा भी बनता है, रिस्पेक्ट भी मिलती है। और क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन चाहिए यार। नहीं, मेन चीज रात को नींद आती है, मेन वही चाहिए। मेन वो नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज करने वाला किसी के लिए। सही है। अच्छा सर, अभी फॉर्मेट में आपको एक चीज बोलता हूँ। सो रिसेंटली मैंने ऐसे कई लोगों से ऐसे कॉल करके पूछा कि मुझे सप्लीमेंट लेना है, व्हिच इज द ब्रांड दैट यू रेकमेंड। अच्छा, तो कई लोग का एक रिस्पॉन्स आ कि अरे यार अगर सप्लीमेंट लेना है ना, ट्राई इंटरनेशनल ब्रांड्स। क्यों? तो ज्यादा करके ब्रांड्स अडल्ट्रेटेड इन इंडिया।
What is your take on that, sir? नहीं, ये एकदम wrong है. I'll be very honest with you. No, I'm just being very blunt. I am very I'm not honest. taking name of any brands. नहीं, you don't Please. take, even I won't take, because लोगों को लगेगा कि मैं अपने ब्रांड की तारीफ करना चाहूंगा. कड़वा सच ये है कि बाय द वे मैं सारे ये सो कॉल्ड इंटरनेशनल ब्रांड के लवर्स को बोलना चाहूंगा कि प्लीज उनके डब्बे को पलट के पढ़ो. एक बहुत ही सिंपल लाइन, दिस प्रोडक्ट इज नॉट अप्रूव्ड और व्हाट डू यू से अपडेटेड और एक्सेप्टेड बाय एफडीए. व्हाई? और किसी भी हेल्थ बॉडी का अप्रूवल या सर्टिफिकेशन रहता नहीं उनके. So, sir, uनका the charge of one dabba is apparently 3 or 4 times what he normally. That is not because of the quality. People are forgetting the fact that is because of the fact that it has been imported. The cost of duty and the logistic has been incurred. The brand right, all this cost has been incurred, इसलिए वो महंगा है. Otherwise, भाई साहब, इंडिया में अब सबसे ज्यादा stringent laws है. The FSSAI is more stringent in India compared to any of the places in the world. Just so इंडिया में कोई ऐसे ब्रांड नहीं है जो लो क्वालिटी या तो adulterated stuff. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. As I said, the good and the bad and the ugly, all three are there. Even though उसके पीछे FSI का आपको मार्क मिलेगा, यार जिसको चीटिंग करना है वो कर रहा है. और there are some brands who are doing amazing job यार. अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुमको जजमेंट लेना है कॉन्शियस कि यार अगर इसका प्राइसिंग ये है और ये ब्रांड की अगर ये लेगेसी है तो प्रोडक्ट अच्छा ही रहेगा. जिनको ब्रांड बिल्ड करना है ना, वो कभी भी चीटिंग नहीं करते हैं. वो कभी भी ये सब शॉर्ट वाले वेज नहीं अपनाते हैं. वो हमेशा लॉन्ग रन का सोच के काम करते हैं. लेकिन जो ये फ्लाई बाय नाइट ब्रांड्स होते हैं ना, बस 6 महीना 1 साल उनको टिकना है, कोई विजन नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, वो कुछ भी करते रहेगा ना, उसको तो सिर्फ माल बेचना है. लेकिन हम तो एजुकेटेड ना, वी कैन मेक अ कॉन्शियस कॉल कि यार ये ब्रांड है या ये बस कल परसों का ब्रांड है. वो समझना ज्यादा जरूरी है क्या, और ये उसकी पेडिग्री क्या है कि किसने बनाया है, क्यों बनाया है. तुमको उतना तो अक्ल रहना चाहिए ना यार कि किसने बनाया है. कोई तो थोड़ा सा तो आप रिसर्च करो, आप थोड़ा सा तो समझो कि यार ये ब्रांड किसने बनाया है और उसका इंटेंशन क्या है. वो ब्रांड बिल्ड करना चाह रहा है या जस्ट बस अपना दुकान चलाना चाह रहा है. ये अभी एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट कस्टमर भी नहीं सोचता है आजकल इतना. लोगों को फैंसी एड्स और फैंसी मार्केटिंग के अंदर जल्दी से, हाँ, दे वांट टू गेट इम्प्रेस्ड बाय दैट. Very few people go to the in-depth of what exactly does this product have to offer to you. But then think about it, you're spending money, you have certain goals in your mind, उतना तो रिसर्च करो. सबसे ज्यादा रैम्पेंट अगर आपको बोलूं मैं, वे प्रोटीन के अंदर जो एडल्ट्रेशन होता है और दूसरा है प्री वर्कआउट्स के अंदर. लोग भूल गए हैं कि प्री वर्कआउट का मतलब था नॉट जस्ट स्टिमुलेंट बट अ लॉट ऑफ अदर फैसेट्स टू इट. Your performance, your endurance, your pump, your blood flow, everything matters in a good pre-workout. लोग अभी बस वो cheap, high stimulant वाला प्रोडक्ट लेके सोचते हैं और ये क्या pre-workout है. Boss, it is not a good pre-workout. It is not actually helping your case. It is not actually helping you improve your performance. They just want to take that cheap, सस्ता माल. They are not realizing the fact that it is not serving the right purpose. So yeah. When they will learn this, they will realize the fact. I mean, just asking, a lot of people who go to the gym or new to the gym join करते हैं, trainers तो रहते हैं gym में. अभी बहुत सारे trainers whey protein and other supplements recommend करते हैं कि आप ये brand के ले लो, क्योंकि उनको by default कट मिलता ही रहेगा obviously. And जो लोग join करते हैं उनको idea नहीं रहता कि कौन सा brand अच्छा है, कौन सा लूँ, which is actually beneficial for me. जो ट्रेनर बोलते हैं वो बात सुन के वो लोग कर लेते हैं, खरीद लेते हैं. तो अदर ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स आर सेलिंग मच मोर देन ब्रांड्स फॉर गिविंग क्वालिटी, क्योंकि उनको सी द थिंग इज दैट कि क्योंकि मैं जैसे स्टोर के बारे में बताया था, वो जिम के ट्रेनर के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है. यार इंसान आज भी इंसान के ऊपर भरोसा करता है, सही बात है. तो ट्रेनर जिससे वो हमेशा मिलता है, जो उसको कोच करता है, ऑब्वियसली उसका सजेशन ज्यादा मैटर करेगा. यहाँ पे दोनों जन की जिम्मेदारी है, राइट. कस्टमर की भी जिम्मेदारी है कि वो समझे कि वो क्या खरीदने जा रहे हैं, और ट्रेनर की भी जिम्मेदारी है कि यार ये भी इंसान तेरे ऊपर भरोसा कर रहा है,
तेरे को भी लॉन्ग रन तक का अगर अपना इज्जत, अपना फोकस रखना है, अपना ग्रोथ के बारे में सोचना है, तो तू भी वो बेच जो सही है, और तेरे को हमेशा इनकम उसमें भी मिलेगी। अच्छा बेचने में भी इनकम मिलने वाली है, सही। उल्टा इनकम के साथ साथ रिस्पेक्ट एंड प्रोग्रेस मिलेगी, क्योंकि कस्टमर भी रियलाइज करेगा कि हाँ मेरे को अच्छा चीज दिया इसने, एंड हाँ इसको नॉलेज है इसलिए इसने सही चीज दिया मुझे। हम ये भूल जाते हैं अरे 500 रुपये ज्यादा मिला, भाई वो 500 रुपये तो वो टेम्पररी है, तेरा हमेशा के लिए कस्टमर टूट जाएगा, उसका क्या करेगा तू, तेरी रिस्पेक्ट टूट जाएगी वो कस्टमर के माइंड में, वो तेरे को गुरु और कोच समझ रहा है, तू उसको यार टोपी भी ना रहे। तो ये भूल जा रहा है कि भाई वो अगर तेरे को पैसा देने की हिम्मत रख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ही नॉलेजेबल और वो बहुत ही रिसोर्सफुल रहेगा ना तेरे से, वो रिसर्च कर सकता है कि तूने उसको क्या दिया क्या नहीं दिया। ये सोच कि अगर उसको जरा ऐसा फील हो गया कि तू चीटिंग कर रहा है उसके साथ में, वो तेरे पास वापस कभी नहीं आने वाला और तेरी इज्जत कम हो जाएगी। ये चाहिए तुमको? नहीं, तुमको ग्रोथ चाहिए। सो या दैट्स अबाउट इट। Hi guys, I hope you're really enjoying the podcast and the conversation that I'm having with the guest. If you have any comments or any queries, or you would like me to invite any other guests to the podcast, please do put it in the comments, or you can DM me. This is my handle right here below. And yes, this podcast is brought to you by Andropique. Andropique is India's #1 all natural testosterone booster. So this is what exactly Andropique is. So it's a testosterone booster meant for every man above the age of 30. If you feel lethargic, if you're tired during the day, you're not getting good sleep, you're not able to perform well in the gym, you have one solution. That's Andropique. So make sure you just take in one capsule of Andropique at night, just before bed, and you will see magic happening from the very first capsule. Go ahead and continue watching the podcast. I'm sure you will love it till the very end. Thank you all and take care. We said your brand, you've got a lot of influencers in your brand. Who are influencing your brand? How many influencers do you have, sir? I will be having close to 25 influencers. How do you define an ideal brand influence? The most important thing is that they should be in shape. The most important thing is that they should be having certain amount of respect to good products. I see to it that I am not hiring influencers who are doing any and every brand. I try my best to get people who have not been touched by any other brand. I try to pick up the newcomers. I don't really rely more on the very experienced one. वैसे क्यों? Because मुझे ऐसा लगने लगता है कि यार वो मेरे साथ में पहले बिजनेस करना चाहते हैं rather than promoting my brand. अच्छा। So मेरा ऐसा सोचना है कि यार मेरे को एकदम raw unbridled talent चाहिए. So आपका like newcomers is always my preference, to be very honest. मुझे ऐसा लगता है कि यार they will realize that कि हाँ यार ये we are doing something new and we should be giving our all rather than just ये एक वीडियो बनाने का। हाँ वो मेरे को मजा ही नहीं आता है, क्या मालूम क्यों। I think वो समझ में आता है डिफरेंस जब वो एक वीडियो बनाने के चक्कर में बनाते हैं, एक्चुअली दिल से बनाते हैं क्योंकि उनको मजा आता है बनाने में। The difference you get to see what it is. Yeah, but पता है what is more important now is the education series kind of thing, which even I want to start. About letting the customers know what they are having, and not just about Strong Nation or Swips Compound or Savory, but anything and everything, all the ingredients, all the science behind every formulation, or what are the things they should be looking at. So yeah, let's see. I'll be doing that very soon, and I just need to get free from all my tasks, all the overburdened tasks which I have taken on my head. But I enjoy that. As long as you enjoy what you do, क्या फर्क पड़ता है? Huh? If you enjoy what you do, yeah, that is the best thing. And you know what, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ यार, मैं हमेशा ये दो ही काम करने वाला, न्यूट्रिशन फिटनेस। तुम मेरे को बोलोगे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्टर बन जा, मैं नहीं बनने वाला, मेरे से होता ही नहीं है वो सब। मेरे से वो काम ही नहीं होते जिसमें मेरे को पैशन नहीं है, मेरे से वो काम ही नहीं होते जो मैं एंजॉय नहीं कर सकता। मैं वही करता हूँ हमेशा, या वही करता आया हूँ जिसमें मेरे को मजा है, मेरे को थ्रिल मिले वो करने में, इवन तो मैं 1 रुपया नहीं उसमें से कमाऊँ। I have done some foolishness in that by not making money, but ठीक है, but I enjoyed that process, so I am happy still. I'm respectful. I'm grateful to some of the opportunities of my life. I have been grateful to some of the best team members I have had. I used to have soldiers and killers, I will say, in my team. And I have been grateful in that, in having some of the best people working with me.
So yeah, I am not a person who's been what I am alone. There are a lot of people who have actually been the part of my journey to bring me till here. And the best part is about my mentor. I was so lucky to have a mentor like Kezat sir. Then my current mentor, Mr. Ajay Thakur, he is ex BSc SAB head of Bombay Stock Exchange. He is the one who created the small and medium enterprises ka complete setup. So he is the creator, so-called creator of it, Mr. Ajay Thakur. I'm grateful I have him as one of my mentor. My current partners, my investing partner, Mr. Anish Maheshwari of Vishal Investment. Amazing guy, amazing acumen of business, has done some of the best investments in his whole career, and he's doing some of the greatest thing coming forward. He's even supported us. So I have been grateful to him. Then my current partner, Mr. Gautam Bajaj of Bajaj Foods. So yeah, we are doing some of the great things, bro. And I'm very sure things are going to be only uphill now. So, sir, Yeah. as an audience, as a janta, or as what do you call customer, all the customers we expect is the best out of whatever we pay. Yeah. We should give the results in what we do. Yes, that should be the always aim यार. And क्या है, मैं हमेशा ये बोलूंगा कि यार तुम खुद भी एज ए कंज्यूमर रिसर्च करो ना. थोड़ा सा एफर्ट डालो ना. तुम पैसा खर्चा कर रहे हो, तुम मेरे बोले हुए या किसी ट्रेनर के बोले हुए या दुकान वाला या इन्फ्लुएंसर के बोलने पे तुम भी क्यों जा रहे हो? तुम भी तो थोड़ा सा रिसर्च करो. इतने अमेजिंग अभी फैसिलिटीज हैं, फ्रॉम गूगल टू चैट जीपीटी टू सो मेनी एआई एप्स एंड व्हाट यू से साइट्स. यार थोड़ा सा तुम रिसर्च कर लो, तुमको समझ में आएगा तुम क्या खरीद रहे हो. थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि अगर मैं ये पैसा दे रहा हूं, अगर ये रॉ मटेरियल का ही कॉस्ट इतना है तो ये इतने सस्ते में कैसे मेरा बेच कैसे रहे है. यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, स्पेशली इन वे प्रोटीन का कैटेगरी. लॉर्ड, आई थिंक सप्लीमेंट सबसे ज्यादा कौन सा वेट प्रोटीन ही बिकता है ना, क्योंकि उसकी एजुकेशन सबसे ज्यादा हुई इंडिया में. क्योंकि उसकी एजुकेशन सबसे ज्यादा हुई इंडिया में. अदरवाइज जरूरी नहीं था वो इतना बिकना. दैट्स ऑल थैंक्स टू द फर्स्ट कंपनी which was brought in India, and why my very great friend, and I respect him crazily, and he's a pioneer of the industry, Samit Gupta. So he promoted the importance of whey protein through the brands he brought. So, yeah, now people understand whey protein. they understand. No, it is a part of a lot of people's nutrition on daily basis. It should be. Having said that, but expecting that कि उनका बॉडी ऐसा कुछ क्रेजी चेंज हो जाएगा just by having protein, कुछ नहीं होगा. नहीं होता है. It is just a food which is actually completing your deficiency, because तुम actually उतना प्रोटीन खा रहे हो दिन में. Some of the biggest pro bodybuilders I have met, many of them don't even touch protein powder because उनका natural इतना प्रोटीन अगर खाते हैं तो they are like मैं क्यों लूं? I don't need it. So, but people need to understand that, na? Then there are certain products like creatine, micronutrients like beta-alanine or arginine or citrulline or caffeine and all the other ingredients for pump like glycerol. ये सब specific ingredients हैं जो तुमको normal food से properly मिल ही नहीं सकता है. और रियली इनके सप्लीमेंटेशन से तुम्हारी बॉडी में तुमको चेंज भी दिखेगा, विजिबल चेंज, बिकॉज वो तुम्हारे नेचुरल फूड में कभी ना था ना मिलता है उतना एडुकेट. तो इसके सप्लीमेंटेशन से यू गेट अमेजिंग रिजल्ट, विजिबल रिजल्ट. यू कैन एक्चुअली फील दोस चेंजेस इन योर बॉडी. सो या वे प्रोटीन से एक्चुअली नहीं दिखता है. No, I think out of all the supplements that if you walk into a supplement store, you will see इतने सारे supplements के आदमी कंफ्यूज है कि क्या लूं. बिकॉज वो आदमी वो कंफ्यूज रहेगा जिसने एक्चुअली पढ़ा ही नहीं है कि उसको क्या लेना है. कंफ्यूज तो वही आदमी रहेगा कि उसको पता ही नहीं है उसको लेना क्या, वो किसी और के भरोसे है. इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि तुम थोड़ा सा खुद का एक रिसर्च करो. तुम समझो तुम्हारा गोल क्या है राइट नाउ. तुम समझो तुम्हारा एग्जिस्टिंग न्यूट्रिशन प्लान क्या चल रहा है, विच इज नेचुरल मील. तुम समझो कि तुमको क्या चीज कैसे भी आउटसाइड से लेने का है इन टर्म्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सप्लीमेंट्स जो तुम्हारे नेचुरल डाइट में आ ही नहीं रहा है, और तुम उसके हिसाब से प्लान करो. कंसल्ट 1-2 बार किसी प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट को
वो भी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट को। न्यूट्रिशन जिम ट्रेनर नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट। सी मैं ये बात कभी नहीं बोलूंगा गैविन, कभी कभी काफी जिम ट्रेनर्स भी बहुत नॉलेजेबल रहते हैं एंड इवन इफ इट ऑल उसने अगर न्यूट्रिशन का कोर्स नहीं किया है ना, उसने बेसिक्स को समझ के रखा है और उसने खुद भी रिसर्च बहुत किया है और उसको जरूरत नहीं है उस कोर्स की। तो बात ये है कि यार चाहे वो ट्रेनर रहे, न्यूट्रिशनिस्ट रहे, मैं रहूं, गूगल रहे, चैट जीपीटी रहे, कोई भी रहे, खुद की रिसर्च कभी फेल नहीं हो सकती है। खुद रिसर्च करो, देन टेक एक्सपर्ट ओपिनियन एंड देन उसके बाद में एक कंक्लूजन पे आओ। मैंने ये भी देखा है कि एक दुकान वाले के यहाँ पे कोई टेस्टोस्टेरोन के सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट मांगने आया और उस दुकान वाले ने उसको आर्जिनिन दिया है और कस्टमर ने भी ले लिया है चुपचाप से और चला गया है। यहाँ पे सिर्फ दुकान वाला गलत नहीं था सर, जो बंदा मांगने वाला वो गलत है क्योंकि रिसर्च ही नहीं किया है। तो तुम कंफ्यूज तो तब तक रहोगे जब तक तुम खुद ही रिसर्च नहीं करो। तुम ये क्यों भूल जाते हो तुम पैसा खर्चा कर रहे हो? चाहे वो सस्ता लेने की बात रहे या सही प्रोडक्ट लेने की बात रहे, चाहे वो क्या प्रोडक्ट लेने की बात रहे, यार थोड़ा सा आपको रिसर्च करना चाहिए। आपकी बॉडी है, आप उसको इंजेस्ट करने वाले हो, आपको सोचना तो पड़ेगा ना। सेम अप्लाइज टू द एएस राइट नाउ। काफी लोग स्टेरॉइड अभी ऐसा लेने लग गए हैं जैसे कि मतलब कोई बात ही नहीं है। दे आर नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट दैट कि यार किसको जरूरत रहती है स्टेरॉइड की, किसको नहीं रहती है, क्या गोल अचीव तुमको करना है, क्या गोल नहीं अचीव करना है। कोई भी कुछ भी लिए जा रहा है, कुछ भी कर रहे हैं। दे आर नॉट रियलाइजिंग दैट कि यार इसके बहुत सारे सेटबैक्स है इन द लॉन्ग रन। Even the pro bodybuilder takes it with a lot of research and coaching and inspection and testings. तो उसकी बात ही करने वाले हैं। हाँ, and उनका गोल अलग है, उनको पता है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो उनका क्या है। यहाँ पे यंग यंग लड़कों को मैं देख रहा हूँ लेते हुए। अब तो मैं 35 years of age तक का सोचा तक नहीं कि और मुझे ना अलाउ किया मेरे कोच ने कि बिकॉज गोल ही नहीं है तेरा कॉम्पीट करने का, तो व्हाई विल यू टेक इट? व्हाई विल यू टेक इट? So always the answer was this, no, I don't need to take it because I am not competing, man. I don't want skin thin, एकदम paper thin skin. Who I have to show? I'm an entrepreneur. I have to sit behind my desk and I have to do my work. I am training for strength. I am training to be fit. I am training to stay active. These are my goals. अगर मेरे को कोई शूटिंग पे जाना है या मेरे को बॉडी बिल्डिंग के लिए जाना है तो मेरे गोल्स चेंज होते हैं, फिर मेरे टाइमलाइंस चेंज होते हैं, उसके हिसाब से फिर सारा प्लान चेंज होता है, राइट? देन आई हैव टू टेक माय रिस्क टू रिवार्ड का रेशियो का कैलकुलेशन। बट करंटली एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, इवन दो आई एम इन द प्रोफेशन ऑफ फिटनेस एंड न्यूट्रिशन, आई डोंट नीड इट, मैन। व्हाई शुड आई टेक इट? आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव माय टी-शर्ट एंड शो समवन माय सिक्स पैक एब्स। एंड सिक्स पैक एब्स यार वो भी कॉन्सेप्ट मेरे को कभी-कभी समझ में नहीं आता है। Nobody can stay with the six-pack abs supernaturally all throughout the year. It is not practical. It is not possible also. It is not even practical. चलो possible है for some of the people who are so driven. But यार as a normal natural human being जिसको कोई भी ऐसा गोल नहीं है लाइफ में या ऐसा कुछ क्रेजी उसके टास्क नहीं है, उसके लिए क्या जरूरत भी है ना? जरूरत है, पता है क्यों? हाँ, आपने क्या कहा था कि अगर मैं कंपीट करूं तो मैं लूंगा ना। हाँ, तो आजकल लोग कंपीट नहीं कर रहे तभी भी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं पता है आपको? क्यों? बिकॉज उनको बॉडी दिखानी है। लाखों लोग जो उनको देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, मुझे फेमस होने क्योंकि मेरे फिजिक की वजह से। बात अलग कि मैं कंपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर उसको फेमस भी होना है, चलो मान लिया कि देखो फेमस होना है और तेरे को बॉडी दिखानी है, और यार इट इज गुड टू बी वेन, इट्स ओके टू बी वेन, इट्स ओके टू बी नार्सिसिस्टिक मे बी, बट the truth of the matter is that कि यार तुम रिस्क ऑफ रिवार्ड रेशियो भी तुम्हारा चेक करो। सर एक कभी मैं नाम नहीं लूंगा, एक बंदे से बात किया, ही इज नॉट एन एथलीट, ही इज नेवर कंपीटेड इन हिज लाइफ, इन्फ्लुएंसर बन गया। आई नो क्यों? बॉडी अच्छी है। बॉडी अच्छी बनने के लिए नॉट लाइक यू गो टू स्लीप इन द नाइट, गेट अप इन द मॉर्निंग, यू हैव अ बॉडी। जो भी लेते हैं, जो भी मेहनत करता है, वो जो भी लेते हैं, वो रिवॉर्ड्स है। People, you got people commenting on your post saying, "अरे क्या जबरदस्त फिजिक," that's why you reward. Yeah, but मेरे ख्याल से देख वो भी एक मोटिवेशन है ना उनकी, हो सकता है that is what is keeping them motivated. But yeah, but having said that, एक आदमी को risk to reward ratio अपना calculate करना है and then decide करना है कि whether I want to walk this path or not.
So yeah, having said that, my own personal opinion, मेरे को नहीं ऐसा लगता है मेरे को जरूरत है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अगेंस्ट इट. आई एम सेइंग दैट कि मेरा जब गोल वैसा कुछ रहेगा तो आई डू इट. अभी जरूरत ही नहीं है तो क्यों लूं? गोल है ही नहीं तो मतलब ही नहीं है. बट वही बस फर्क इतना है कि लोगों को लग रहा है कि ये क्विक फिक्स है, बट इट इज नॉट क्विक फिक्स. Same is the case with Ozempic right now. Ozempic has been launched in India now, Correct. officially. Now some of the people are going to use it like mad without even thinking that it is still not completely researched ingredient. It is still not completely and absolutely. Sir, if there are format कैसे कि खबर है कि there are known personalities who are consuming Ozempic. Many are using it now. Correct. खबर फैल गई है कि ये सेलिब्रिटीज कंज्यूम कर रहे नहीं, हैं. खबर फैलने की भी जरूरत नहीं, अब तो वो खुद ही कन्फेस कर रहे हैं. तो if people look यार this drug is working तो लेंगे ना. See, some of the cases it is great. मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे वो स्टेरॉइड रहे, whether it is Ozempic like drug or whether it is plastic surgery, हर चीज की है ना यार, वो जरूरत को कंप्लीटली है ना, उसको रीजनिंग को फुलफिल करना चाहिए. मैं किसी प्लास्टिक सर्जरी को जाने वाले लोगों को रोकने नहीं वाला हूँ जिसको एक्चुअली कॉस्मेटिकली बहुत डिफिकल्टी है. Some of the people who lose crazy amount of weight and then they have crazy saggy skin. I will never stop that person from going for plastic surgery and getting that saggy skin improved. Everyone wants to look good. Everyone wants to look confident. And there is no harm in doing that for a person like that. I will never disrespect that kind of person. Same for Ozempic. Some of the people just can't lose weight, are too obese, are actually having that amount of medical difficulty. For them, it is like Amrit. Sir, now you've got so many athletes on board with you. Now apparently जितने भी athletes हैं, maybe they're influencers or maybe they're actually athletes, everybody is focusing on monetizing their influencership with brands. What is your take on it? See, they should be. I'll be very honest with you. They should be. They deserve to make money. There's nothing wrong in making money, but the ethical way. But yes, वो स्पाइडरमैन वाला डायलॉग एकदम फिट होता है. With more power comes more responsibility. So वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तुम्हारे ऊपर, इन्फ्लुएंसिंग की लोगों के ऊपर. सही चीज बताना तुमको यार, तुम्हारी जिम्मेदारी तुमको सही चीज बताना है. मैंने तो मेरे गुरु से यही कहा कि यार, यू से व्हाट यू बिलीव इन, यू फॉलो व्हाट यू बिलीव इन, कम व्हाट में. रास्ता कितना भी खराब रहे, तुमको चलना है फिर वो, क्योंकि तुमको पता है कि तुम सही हो. तो वही आदमी जीतता है ना लाइफ में. वही आदमी को फिर जिंदगी भर रिस्पेक्ट मिलती है. आज बॉस के लिए इतनी रिस्पेक्ट है आज भी, और हमेशा रहने वाली है, बिकॉज सब पता है व्हाट ही वाज. ही यूज्ड टू से व्हाट ही यूज्ड टू बिलीव इन. ही यूज्ड टू स्टिक टू हिज गन्स. ही यूज्ड टू फॉलो व्हाट ही यूज्ड टू प्रीच. सेम विथ एनी एथलीट और इन्फ्लुएंसर. ऑनेस्टली तुमको सक्सेसफुल होना है ना, तुमको रिस्पेक्टफुल बनना है ना, वो करो जो तुम बिलीव करते हो. और ये भी नहीं है कि तुम कुछ डिल्यूजनल बिलीफ में हो तो तुम उसको ही पर चल रहे हो. भाई प्लीज रिसर्च करो तुम्हारी बिलीफ के ऊपर भी, और फिर वो तुम प्रीच करो. अब चाहे तुमको एंटरप्रेन्योर बनना है या सिर्फ इन्फ्लुएंसर बनना है, बट डू इट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोई प्रोडक्ट तुम बना रहे हो, फॉर द सेक ऑफ लॉर्ड, मेक समथिंग विच यू बिलीव इन. यू आर वेरी वेल रिसर्च्ड ऑन इट एंड देन यू टॉक अबाउट इट, बिकॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर to preach your followers, to teach your followers. और तुम जब सही करोगे, तुमको सक्सेस ही मिलने वाला है. कोई उस सक्सेस को रोक नहीं पाएगा. फिर खुदा भी तुम्हारे साथ में कि तुम सही काम कर रहे हो, क्योंकि तुम गलत काम करोगे ना, एक ना एक दिन वो काम खराब होता ही है. हर मूवी, हर स्टोरी में तुम यही देखोगे, बुरा आदमी गिरता ही है, कम वॉट में. So, having said that, अगर तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, you need to believe in that. You need to be very well versed about your product, and you should back up with what you're claiming. As simple as that. Now, bridging backup in every influencer you see, एक प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे अच्छे एक साल तक, उसके बाद ब्रांड चेंज करके बोलेंगे. How will see, उनको पैसा बनाना है, no doubt about it. ब्रांड्स भी उतना टिकना चाहिए एथलीट के साथ में. एथलीट को भी उसका प्रेप करना है, उसका कंपटीशन करना है, उसके भी खर्चे. बट यस,
एट द सेम टाइम एथलीट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कौन से ब्रांड के साथ में काम कर रहा है. कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तुम हर साल ब्रांड चेंज करो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है. बट यस, तुम कौन से ब्रांड के साथ में काम करते हो, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्योंकि ये बात भी तो उतनी सच है ना गेविन कि यार सिर्फ एक जन अच्छा काम नहीं कर रहा है. देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स हु आर डूइंग गुड जॉब. एज आई सेड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ब्रांड अच्छा काम कर रहा है, मल्टीपल ब्रांड्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आई रिस्पेक्ट देम एंड मैं उनके मुंह पे भी उनसे मिलता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ यार यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. आई रियली रिस्पेक्ट दैट बिकॉज द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज दैट कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दैट इंडस्ट्री ना. मैं प्यार करता हूँ उस काम से, मैं झूठ नहीं बोलूंगा. मेरे में वो कोई जेलेसी नहीं है अच्छे काम के लिए, और नहीं रहेगी भी नहीं कभी, चाहे कुछ भी हो जाए. बिकॉज आई लव माई वर्क, आई लव माई इंडस्ट्री. सो हैविंग सेड दैट, तुम अच्छे ब्रांड के साथ में ईयर बाय ईयर काम करते रहो. Both grow together. Both grow together. You help the brand helps you. साथ में ही चलते तो मजा आता है. हाँ चलो, मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ एथलीट रॉन्ग है. काफी टाइम ब्रांड्स भी रॉन्ग हो जाते हैं, और कभी काफी टाइम ब्रांड्स मजबूरी में भी रॉन्ग होते हैं यार. इट इज नॉट इजी टू रन अ कंपनी. And obviously it is not your. It is not easy. You're dealing with it on a daily basis. It is not just one thing. It is not just marketing. It is not just sales. It is operations. It is so many financial challenges. It is situations of the market. So many things, my friend. Running a company is Not not easy. a piece of cake. I totally agree. And only the entrepreneur knows what he goes through every day in, day out. That fight is different. हम लोगों को पता है स्टार्टअप कल्चर के अंदर सिर्फ वो एक दो सक्सेस दिखाई देते हैं. हम लोग 98-97% लोगों को भूल जाते हैं कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं हर दिन, उनमें से काफी लोग डेडिकेटेड हैं. कुछ मिस्टेक्स की वजह से नहीं आगे जा पा रहे, कुछ कमियों की वजह से नहीं जा पा रहे. कौन नहीं सक्सेसफुल होना चाहता है? हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है. बस जरूरी नहीं है कि उसके पास में सारे वो इंग्रेडिएंट्स रहे सक्सेस के. बिकॉज सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट मार्केटिंग, नॉट जस्ट अबाउट गुड प्रोडक्ट, not just about good salesmen. There are a hell lot of things. As I said, even in my success, it was not just my success, yeah. It was due to a lot of other components also, and a lot of good people who worked with me. Lot of amazing people who supported me and worked with me and followed my vision. And yet again, in all the new companies and adventures which I am doing right now, it is not going to be only because of my own effort. It is going to be a team effort. I always see to it that people who work along with me, I groom them, I motivate them, I try my best to teach them, not just about work, but even about life skills. Because I know how I came till here. I know मैंने कितनी जिद्दोजहद करके आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ. मुझे पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है कोई तुमको मिले और ये बोले it is so important to learn this thing and that thing. So I, out of the way, I try my best to teach people, even when the person is not asking me. वो even built in हो गया because of my mentor. Because I saw him doing things for people are not even asking for. I saw him going out of his crazy way to help people. Somehow I try my best to just follow that. I'm to not even 0.5% of a man he was. So yeah, that's what I try my best to do. To groom people, to motivate people, to try to let them know कि ये wrong जा रहा है, ऐसा कर, ये कर, वो कर. Even though maybe sometimes they might not feel encouraging about it, but मैं अपनी कोशिश करता हूँ. That's all. और मैं कोई expectation नहीं रखता हूँ, मेरे को कोई expectation भी नहीं है. I do consider myself only as the magician. I know, yeah, I have the abracadabra. What I'll say is what I'll make. So I believe in myself and I believe in the Lord. He will always support me. He's always supported me. I believe in the people who love me and support me and who have always taken care of me. So I know I'll win and I'll always win. But yeah, anyone who's doing any kind of work, any kind of job, any kind of innovation, any kind of business, my only take is that कि यार you do what you believe in.
And whatever you believe in, please research about it. Just don't have that delusion of your own world. So, yeah. Say. So let's just get into very interesting topic right now. When I just spoke to you about everybody you see wants to consume whey protein, right? What is your take on chicken? Is one of the best sources of protein for people who are non-vegetarians, right? What is your take on chicken protein? When I say talk about chicken protein, I'm talking about chicken protein as a supplement. What is your take on it? Amazing idea. It is an amazing product also. The only thing is that by the current prices of whey protein as a raw material, it is shooting up like crazy. And whey protein is not the only source to get your protein. माना कि उससे अच्छा बीवी, उससे अच्छा एंड उससे अच्छा अमीनो प्रोफाइल किसी और प्रोटीन सोर्स में नहीं है. बट कीपिंग इन माइंड आवर इनकम सोर्सेस नाउ और इनकम का सिचुएशन, यार इट इज बिकमिंग सुपर एक्सपेंसिव. Having said that, chicken as a protein source is amazing. Correct. Has less fat, easy to eat, easy to cook. But yes, sometimes you can't carry it everywhere. Sometimes नहीं जमता है भाई खाने के लिए, होता नहीं है खाने. यार एक तेरे को हद होती है खाने की भी. अगर वही चीज मेरे को कोई पाउडर फॉर्म में दे रहा है, आई थिंक इट्स एन अमेजिंग आइडिया. हाँ, इट हैज टू बी प्योर चिकन प्रोटीन. The source has to be neat and clean. The cleanliness part, the manufacturing part should have been taken care of in the right way. It's an amazing source of protein. Not just chicken, collagen, egg protein, rice bran protein. All these are good source. And value for money bhi hai, kafi. In this current market of crazy whey protein prices shooting up, these are the options which you should look Are at. we going to see a lot of options coming in the market when it comes to protein? Because आना ही पड़ेगा और आने ही वाला है और आपको लेना भी चाहिए क्योंकि वे प्रोटीन सुपर एक्सपेंसिव हो रहा है और होते ही रहने वाला है. It has become a commodity which is just going to go up now. The more the demand, the more expensive, and there are a lot of factors which goes into increase of the whey protein price because maximum protein in India, especially whey protein, is imported. And when the moment you use the word import, it comes with two major costs: the logistical cost and the duties. कैसे सस्ता पड़ेगा तुमको? So चिकन प्रोटीन इंडिया में ही बन रहा है, इंडिया से ही लो. एग प्रोटीन है, राइस प्रोटीन है, easy on pocket, good quality also. Even though it is not complete amino profile, भाई साहब पैसे भी बचेंगे, क्वालिटी भी अच्छा ही है, लेने में कोई तकलीफ नहीं है. और प्रोटीन का फुलफिलमेंट भी होता है. हाँ, why not? क्यों नहीं? So the only thing is that यार it has to be made right. It has to be actually true to the label, what the label is saying. That's what I will say. I don't see any harm in it. Super. That means what you're saying is we're going to see a lot of new variety of proteins will come up on the market. And it will come, and there is no other option also for the consumer. कंज्यूमर को भी थोड़ा सा ये अक्ल लगाना चाहिए. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन और आइसोलेट के बारे में. भाई सारी दुनिया को ऐसा लगता है आइसोलेट इज द एंड ऑफ ऑल. भाई साहब, यू आर पेइंग सो मच ऑफ क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी जस्ट फॉर सेविंग फ्यू ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. व्हाट मैडनेस इज दैट? कोई पॉइंट नहीं है. आप कॉन्सेंट्रेट भी लोगे, हल्का से ही आपका प्रोटीन परसेंटेज कम हो रहा है और थोड़ा सा कार्ब्स जा रहा है. आप उनसे इतने सुपर प्रो एथलीट हो कि तुमको 2 ग्राम 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बचा दे और ओह इतना परसेंटेज प्रोटीन कम हो गया. भाई किसको फूल करते हो आप यार? प्रो बॉडी बिल्डर्स ऐसे नहीं सोचते. थिंक अबाउट इट. और भाई अगर वो तुमको स्क्रीन पे ऐसा बोलता हुआ भी दिख रहा है ना, ही इज गेटिंग पेड फॉर दैट. इन रियलिटी इट डजंट मैटर टू देम. आप रियल लाइफ जाके उनका एक्सपीरियंस देखो ना, उनका लाइफस्टाइल देखो, तुमको जब समझ में आएगा. और हम पागल की आइसोलेट ही लेना. अरे भाई पैसा भी देख. मैं एक सप्लीमेंट कंपनी ओनर होके ये बता रहा हूं कि यार थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. ओके, इफ एट ऑल योर गोल इज लाइक दैट, जीरो कार्ब, जीरो तुमको लैक्टोज चाहिए, हाँ
कहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाता है आइसोलेट का काफी टाइम. देयर आर मेनी पीपल हु आर लैक्टोज इंटॉलरेंट एंड बिकॉज वे प्रोटीन आइसोलेट हैज नो लैक्टोज, उनके लिए वो अमृत है माना एज अ सप्लीमेंट. बट अदरवाइज if you're trying to take it for saving some amount of carbs and some better amount of protein and the speed of absorption, by you're fooling yourself. Please, ये my personal opinion. You're just fooling yourself and तुम्हारे पास ज्यादा पैसे मेरे को लगता है. I'm तुमको stunned. खर्चा करना है. No, I'm stunned by you being a businessman who actually, manufactures protein, is telling people to think about the money you're spending. तो obviously यार, क्योंकि I do not think there is anyone as genuine as you are, and I appreciate your honesty because I will obviously, if I'm a business, I will not know people spending money. I will not know. नहीं, I will never want. I will want them to spend money wisely. I will want them to do the right thing. I will want them to love what they are eating. I will want them to not get fooled. I will want them to spend their money, hard-earned money, very, very wisely. Because I know how I used to purchase my supplements, how I actually fulfilled my lifestyle back then. Right. But then, having said that, जैसे मैंने बताया, ना तो वो खराब है, ना तो वो एकदम राइट है. आइसोलेट यार कुछ लोगों के लिए बहुत ही राइट है, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है. वो कुछ लोगों के लिए बहुत ही राइट है, जो एकदम जीरो कार्ब का गोल फॉलो कर रहा है. बॉडी बिल्डर ज्यादा हो गया. अरे लेकिन यार बॉडी बिल्डर भी इतना नहीं सोचता है रियलिटी में. बॉडी बिल्डर को बहुत स्मार्टली पता है कि 2-4 ग्राम से कुछ फर्क नहीं पड़ता. उसके बाप को भी his expenditure of calorie is that crazy. Correct. So that is not gonna do anything to him. But yeah, some people in that fake marketing agenda isolate. I see. Okay, so let's go into a new segment of another segment of the podcast. Is called the rapid fire. आपको पता है rapid fire चलता कैसे है? Yes, I've seen that. Format simple. I'm going to ask you a question. The first thing that comes into your mind, you tell me the answer. That's all it. Okay, so brace yourself for the rapid fire and the Andropique Mic Testing. So the first question coming to you is the best business idea you ever got. I think the best business idea was always the gym, the first gym which I First gym. Yeah. That was the first one, and that was the idea which actually just came spontaneously. So I was like, okay, I can do it. Even though nobody believed around me, I was pretty young and lanky boy. To own a gym was a weird thing, but then I knew I would pull it off, and I did pull it off. So I think that will be always my first and the foremost best business decision. Done. It's kind of nostalgic also. Okay, sir. Okay, moving ahead, sir. Second question: which is your highest point of your life till date? Without a doubt, doing an event with Shah Rukh Khan. Achha, what about it? I was, as a brand, I did a show with him, event with him, in which he came very graciously and he was with me. There's a YouTube video also of me and him, in which he's saying कि यार तुम्हारे आम से कि जितना तो मेरा टांग है. So that was the greatest point. And why greatest? Because I was always a fan of Shah Rukh. And not just as an actor, but as a person he is, and the things which he's achieved and the things he preaches, and he even follows in his life. And I even said him the same thing on stage after meeting him. And the great thing is that he's such an amazing guy. He remembers your name. He remembers you and respects you like he knows you since a long time. He's an amazing guy in that sense. You have to meet him to believe this thing. Matlab, you will always hear this thing about him, but he has a different level of charisma around him. Different level. Wow. So yeah, that was one of the highest most. point. And I was not even in belief on that day. I really did an event with Shah Rukh Khan. And that was some crazy day, yeah. My team was overjoyed. I was overjoyed, no doubt about it. You always remember that. So I have his photo of me, him, and my team in my home. Wow. Okay. So what is your ultimate goal in life? This is the biggest question mark of my life, to be honest. You know what? Many people might think that I'm doing anything and everything for money, but that was never my motivation. I was always chasing greatness. I was always trying to build something valuable. I was always trying to achieve something greater than what I am. Honestly, it was never money. It will never be money.
because some of the most closest people around me will vouch for this fact that it is not about money with me. Uh, Having said that, some of the people might think, but that is not the truth. Really appreciate it. Building something greater is always been my goal. What is the one thing that turns you down? Yeah, disloyalty turns me down. Disrespect to the work turns me down. Matlab, casual behavior towards one's work or career turns me down big time. Yeah, nothing turns me down more than these three things: disloyalty, casual behavior, no respect to work. These are the things which I cherish the most here. Yeah, even discipline and punctuality. Yeah, I have deep respect for all these things. Even as a very young kid, the first things I believe I learned was all these things. And You- this maketh a man is what I kind of Correct. learned. You know, people are so lucky right now, Gavin, with the amount of knowledge they can access, the amount of knowledge they can learn and know. Back then, 20 years before, internet was not there. Yeah. As a young kid, I had to scratch for resources and information and things to learn. The only resource to learn about life with me was Times of India newspaper and Reader's Digest. Hmm. And in Reader's Digest, one of the first thing which I learned was all the successful people wake up early in the morning. So I saw to it that that is my life come motto. Till today, that is what I follow and believe in. Sharp at 6 o'clock, I will wake up. Come what may. I have to wake up. No matter what time you I sleep. don't need any alarm. I never needed an alarm for that. So these are some of the basic things which I learned. And that is one of the reason I respect my mentors so much, because they made me in what I am. I am whatever I am because of my mentors, not because I am something great. I'm not. Yes. So, what is the one myth in the fitness industry that you want to burst? One myth which I want to burst is that protein लेने से body बनेगी. Protein is just fulfilling one of the need of your requirement. Body बनाने का product नहीं है वो, technically speaking. Actually, It is just one of the sources of your need. nutrition. Yeah, वो तुमको ऐसे भी करना है, चाहे तुम exercise कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. So yeah, I think that is one of the myth. What is the best advice you ever got? Best advice, there are so many, yeah. But one of the best advice which I still follow is that to pray before I leave my home. Yeah, come what may, I pray before I leave my home. Whatever time it is. For my work, whenever I leave my home, I actually pray. Many people don't know that. Achha. So it's a very good thing, but It is very important to be grateful to the Lord. now we spoke about you having influencers for your brand. In general, who's been your favorite influencer so far? Favorite influencers so far? There are many. I will not take the risk of naming one No, but one name. because they will नहीं, एक के नाम लेना ही पड़ेगा fight, आपको. bro. नहीं, it's okay. No one fight. There कोई will fight be a नहीं crazy fight. आप एक काम कीजिए, आपको मालूम है बिंगो कैसे खेलते हैं या तो हाउसी कैसे खेलते हैं. एक you put all the coins in a bag and जो coin आएगा आप वो नंबर बोलोगे, सारे नाम डालो और एक नाम खींचो, वही आपका फेवरेट. Hey, till today, one of the most favorite till today for me has been Julie Wagle. She was one of the influencer for me for my brand, and then what she has become now, it's inspiring. She's amazing. Okay. Yeah. And so the one message you want to give everybody who's watching the video, for all the fitness aspirants who want to start something in the fitness industry, want to give in their contribution to the fitness industry, what will be your message for them? See, I'll be very honest. Contribution वगैरह चलो ठीक है. We talk about being so nice and things like that. But truth of the matter is that कि चाहे वो fitness industry रहे या any of the business or any kind of work, please learn that. Learn that not just by books, not just by internet, but even go ahead and do hands-on work. Learn that. Don't be shy. Don't feel disrespected कि कहीं पे नौकरी भी करना पड़े या समझना पड़े या लो लेवल पे काम करना पड़े. By hands-on experience is never going to get beaten. And you will actually really know all the things.
your own limitations you will come to know, na? Or maybe your strengths you will come to know. So yeah, learn the trade rather than just going as a blank. Yes, sir. Thank you so very much, sir. Thank you for your insights on this podcast for all everybody. Thank you for having time to be on the podcast. Always. It means a lot. Like small request, sir. This is a mug that I want to give you. Again, Yes, again. But I want you to give me an autograph on the mug if you can, please. autograph or A message, we shall do. The message and an autograph. yeah. So I have written be positive always. Super. That is the status you will always see on my Yes. pages Yes, also. sir. Thank you, sir. And Some of the most important things, I believe. Thinking positive in all the situation is the most important thing which can actually keep you alive and kicking. absolutely, sir. Yeah. Thank you very, very much, sir. for- I am actually grateful to you, Gavin, for calling me in here. It's always a joy. Thank I you, sir. love communicating with you. I love talking with you on all the aspects of whether it is fitness industry or the game of sales and marketing. And the kind of charisma you have, the energy you have, the amount of control you have, it's unbelievable. I know you are a force to reckon with in this particular industry, and I am very sure any brand which will be working with you is gonna reap great amount of benefits along. Thank you, with sir. Thank you very much. So you see to it that you're kicking ass as always, and I'm expecting myself to be coming back to you all over again pretty soon. That's all. Absolutely, sir. Thank you so very much, sir. But on this note, I'm not going to end the podcast that way. There is something that I got for you, something really very special. Oh yeah, And I won't let you go empty-handed. Yeah. No guest on the podcast goes empty-handed. always. You're a very special guest. A small you so much. gift for you. Thank you so much for this particular gift. Thank you. Hope you really like it, sir. But being with you is always a gift. For me. Thank you, sir. Means a lot, sir. I'll Thank be you very, honest with very you. much. Thank Being with you is a gift more than anything at all. So yeah, I enjoyed my time with you. Thank you, Rizwan, sir. Thank you care, so very much, sir. Thank you.